welcome back to the channel. So in last video we have seen the traditional marketing strategies. Also we have seen lots many marketing strategies online, offline, right? So in this video we'll be checking some more concepts of the marketing, right? Also we will check basically what are the statistics that is involved over the world, right? So digital marketing हम पढ़ रहे हैं, so basically we should be knowing and we would be knowing yes, we are seeing the internet users by region, right? That is all over the globe. So ये हमारा जो फिगर है that is of March 2011 के जहाँ पे basically over the continents इंटरनेट यूजेज जो था बेसिकली, राइट? इंटरनेट यूज़र जो थे बेसिकली हाउ ओवर एशियास यूरोप, राइट? एशिया का यूजेज हमारा दैट इज़ अ 44%, यूरोप जो है दैट इज़ अ 20.7%, नॉर्थ अमेरिका है देयर यूजेज was 13%, Latin America 10.3%, Africa 5.7%, Middle East 3.3%, Oceania, Australia 1%, right? So these are the statistics that has been taken from the source Internet World Status, right? So 2011 की condition that will give us a really kick. Basically 2.1 billion users जो थे basically they were using the internet user, right? They are using the internet. So you can think of कि अगर digital marketing if you have started doing in 2011 itself, and अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, if your service is good and if you have capture a good digital marketing company or if you are expertise of that, और अगर आपने ये चीज़ ऑनलाइन स्टार्ट कर दी तो एटलीस्ट यू कैन थिंक फॉर अ different region users and you can think for a targeted audience that was a 2.1 billion, right? अगर let's say 2.1 billion में से भी at least 1 billion या half billion जो है वो भी अगर if they are likely to buy or likely to show their interest in your product or service, so you can think for the revenue, right? So that is a cool statistic. और भी चीज़ें देख लेते हैं over the period, right? So this is the Facebook top countries and cities of July 2017, right? So of course हम हर जगह में आगे रहते हैं, right? So in that year also India has top, of course the countries with the largest number of active Facebook users, right? So India में Facebook, United States, Brazil, Indonesia, Mexico, right? इतने सारे countries हैं, but still we have give a good competition, or we can say we are more socialized. So ये हमने एक प्रूव भी कर दिया है, right? That भी पीछे नहीं पड़ता, right? So you can count yourself, of course, 2 CR 41 lakh. You can also write in the comment section how much zeros that will make a billion, how much zeros that will make a trillion, right? So you can also count yourselves. दूसरी भी आप सेकेंड देख लेंगे cities where the large number of active users Facebook user जो थे that is a Bangkok, Jakarta, Dhaka, right? So India, so that is a 11% that is occupying, right? So आप समझ सकते हैं कि in 2017 itself इतने सारी अगर countries मिला लें, so how much percentage of the targeted audience that you can target, right? और वो भी हम यूज़ करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट ओवर द फेसबुक, राइट?
सो फेसबुक आपने यूज़ किया होगा, फेसबुक पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी एड्स चलती है, प्रोडक्ट्स की एड चलती है, राइट, वेदर यू आर फैमिलियर विद द प्रोडक्ट, वेदर यू आर फैमिलियर विद द वेबसाइट्स, राइट। सो इतनी सारी जगह पे मार्केटिंग ऑनलाइन चलती रहती है, राइट। सो कंसिडर कि इतने सारे यूजर्स हैं, कंसिडर 10 टॉप 10 कंट्रीज इन 2017. So how much targeted audience you would be targeting, right? So digital market is boom, of course, क्योंकि you can just understand कि इतने सारे active Facebook users हैं, if they are regularly checking, let's say, या तो फिर दिन में भी एक बार भी इतने कंट्री के लोग अगर चेक कर रहे हैं, so you can think of the targeted audience, right, who are likely to show their interest in your product. This is one more fact that is a digital in the United States in July 2017. Of course, इंडिया है, हम वहाँ भी पीछे नहीं रहेंगे. So that is digital in India in July 2017. So ये फिगर्स आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत रीजन में आइडिया देगा, राइट. Why we are talking all this stuff is because एटलीस्ट हमें ये चीज़ें पता चले इंटरनेट यूजर्स कितने हैं, डिजिटलाइजेशन क्या हो रहा है, और वो भी ओवर द पीरियड, राइट, कितने यूजर्स हैं. So basically what we are looking for is on the digital age, on the digital devices with using the technologies, इतनी population है, so इतने सारे लोग तक हम पहुंच सकते हैं, right. We can reach this much number of users in this year, right. So just consider in United States total population that is 327 million, जिसमें urbanization अगर सोचे that is 82%, जहाँ पे इंटरनेट यूजर से that is penetrating up to 88%, 287 million guys, right. 287 million they are using the internet, जहाँ पे further penetrate करे that is 240 million users actively they are just using the social media, right. Internet user, social medias, right. Let's further see unique mobile users, they are 267 million, penetration of 82%, right. Active mobile users जो है वो भी socially, so they are 204 million, right. So ये तो हो गया सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का. If we cross check in the same year with the India, so total population that is going, बाप रे, that is 1282 million, right, in which 33% is urbanization. जहाँ पे इंटरनेट यूज़र आप देखिए इन 2017, ऑफ कोर्स वी आर अगेन क्रॉसिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, सो दैट इज अ 462 मिलियन, दैट इज पेनिट्रेटिंग 36%, राइट, कि जहाँ पे आपका एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स है 241 मिलियन. अगेन वी आर अहेड, राइट. मोबाइल यूनिक यूजर्स अगर हम देखें, अगेन वी आर अहेड 734 मिलियन, राइट. सो आई कैन थिंक फॉर यहाँ पे अगर ये स्टैटिस्टिक मिल रहा है तो एटलीस्ट आपने अगर कोई मोबाइल की भी कंपनी बना ली, सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ कि कितने यूजर्स आपको मिल जाएंगे, राइट. कोई अच्छा आपने ऐप बना लिया हो तो उस टाइम पे, तो यू कैन थिंक फॉर हाउ मच मिलियन ऑफ पीपल यू कैन टारगेट, राइट. वन मोर इज दैट इज एक्टिव मोबाइल यूजर्स हु आर सोशली कनेक्टेड 203 मिलियन, राइट. सो गाइस यहाँ पे थाउजेंड्स में नहीं, लैक्स में नहीं, सीधा बात हो रही है दैट इज इन द मिलियन, राइट. सो in this age right now 2023 AI हमारा है, so let's also check with the AI के what exactly the fact the AI is giving, right. So we have just asked AI to give some records internet over the world, right. We have also checked the ITU website, right, where we are checking 5.3 billion people who are online in the world, right. So ये हमारा जो facts and figures है that we are collecting from year 2022, right. Still there is a lot much rapid growth, right. Digital gadgets की अगर हम बात करें कि who are the users of the PC, tablets, laptops, right. So almost you can think for a figure now in a billion, right. So यहाँ पे आप देख पा रहे हैं world is projected to reach 16.8 billion by 2024. So हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, not 23. We are just targeting 2024, where the mobile devices, active mobile devices,
सो ऑफ कोर्स वी कैन से एक्टिव मोबाइल स्मार्ट यूजर्स ही होंगे, ऑफ कोर्स उन पे इंटरनेट चलेगा, उन पे ऐप चलेगी, they would be connected on the social media. So you can think for a targeted audience over the world, that is 16.8 billion, right? इतने सारे गैजेट्स, इतनी सारी चीज़ें, ये भी एक थोड़ा फैक्ट्स है. where in 2020, right? So of course now we have almost checked 2024, so ये देखने का भी कोई मीनिंग नहीं मिल रहा, but still you can think for the India population 1.39 billion in 2021, रैपिड हमारा ग्रोथ हो रहा है with the increase of 13 million, right? मेल फीमेल रेशियोज जो हमारे हैं, so let's not we are going into the gender biasing. Of course सब users हमारे हैं जो they are more connected to the digital technology, they are more familiar, they are living in the urbanization, right? अब तो हर एक के पास मोबाइल है, right? So let's not bifurcate the users. So ये हमारी कंडीशंस हैं. ऑफ कोर्स इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इन 2013, राइट? सो कहीं पे भी वी आर नॉट लैकिंग बिहाइंड. सो ये हमारा डिजिटल ग्रोथ का एक अगेन फैक्ट है. इन जनवरी 2023, चेंज इन द यूजर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस एंड सर्विसेज ओवर द टाइम, जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो ईयर ऑन ईयर जो चेंज हो रही है 0.8% with a change of 67 million unique mobile phone users हैं. Again year on year change, that is 168 million with 3.2% change. internet users हमारे हैं. Again the year change with 1.9% with 98 million और active social media users year on year change with 3%, that is 137 million, right? So digital growth भी आपका 2023 में 24 में भी हमने AI से चेक किया, right? So they would be collecting some details from the sales, production, all the things, but at least we can think for 2023 कि जहाँ पे total population over the period changes हो रहे हैं, right? Unique users of the mobiles कितने बढ़ रहे हैं, internet user कितने बढ़ रहे हैं, right? Active social media users कितने बढ़ रहे हैं. If you club all the thing together, so you can think for a huge audience, huge targeted audience, right? So हमें एक बड़ा स्कोप मिल रहा है. We are having very good platform. So now you have to think for कि आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, आपके सर्विसेज में कितना दम है, right? One more facts, that is a global population over the time, जहाँ पे you can see the graph January 2013 से लेके over the period 14, 15, 16, 17, right? So ये सारा हमारा जो है that is a global population figure जो हमारा है, that is in the millions, 7,206, and over you can see the changes 7,877, 7,942, 8,009 in a million, and which is a huge number, right? So ये हमारा हो गया global population in January 2023, right? One more facts you can check over the continents कि हमारे basically the number of people living in each region, कि जहाँ पे हमारे सारे continents यहाँ पे आ गए हैं, right? North Europe हो गया with 107 millions, North America हो गया that is 378, Southern America हो गया 438 millions, right? Southern Africa 69 millions, Southern Asia 2017 millions, Eastern Asia. So अगर आप सिर्फ एशिया का पार्ट ही अगर पकड़ ले, मतलब if you just target, let's say in respect of your budget, in respect of your whatever the planning that you are having, right? So अगर हम एशिया का ही पार्ट देख लें, so that is almost covering in 1,000 millions, right? So huge opportunity, right? So you can just pause the video and you can just check for the major figures for the continents, right? So ये हमारा पूरा एक अच्छा वर्ल्ड मैप भी हो गया, ग्लोबल व्यू भी हो गया, right? पॉपुलेशन हमारी कितनी है, right? So ये सारी चीज़ें you can just calculate and you can just think for a targeted audience, right? One more figure facts, that is device ownership. Again the facts of January
23 कि जहाँ पे ईयर ऑन चेंज, जहाँ पे कोई भी टाइप का मोबाइल हो, सैमसंग हो, आईफोन हो, राइट, दैट इज 96.2%। स्मार्टफोन्स हमारे हैं, दैट इज 95.9%, राइट। फीचर फोन्स है जहाँ पे लैपटॉप्स हो गया आपका, दैट इज 58%। टैबलेट्स हो गए आपके, स्मार्ट होम डिवाइसेस हो गए, राइट। नाउ ओवर द पीरियड IoT डिवाइस, IoT टेक्नोलॉजी से भी चीज़ें आपकी, यू कैन थिंक फॉर द डिजिटल रिवॉल्यूशंस कि जहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, स्मार्ट वॉच, रिस्टबैंड्स, गेमिंग कंसोल, राइट, वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस। सो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हर जगह पे they are just growing, right? A percentage of the internet user age, that is 16 to 64, right, who are just owning or who are just having this kind of devices. So huge population who are using this, huge target, right? So हमारे लिए एक scope channel बहुत बड़ा है यहाँ पे. Also we can see one more fact, that is a this number of users, they are just daily स्पेंडिंग द टाइम विद द मीडिया कि जहाँ पे आपका इंटरनेट यूजर्स हमने देख ही लिया, राइट, 6 hours 37 minutes ईयर ऑन ईयर चेंजेस। जहाँ पे टेलीविजन पे भी लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 3 hours 23 million, राइट। अगेन इट एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम ईच डे दैट इंटरनेट यूजर फ्रॉम 16 to 64 दे आर स्पेंडिंग विद दिस काइंड ऑफ डिफरेंट मीडियाज, राइट। सो गेमिंग हो गया आपका, ऑनलाइन आपने न्यूज़पेपर देख लिया, पॉडकास्ट देख लिया, राइट। ऑन एवरेज टाइम स्पेंडिंग लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, दैट इज 1 hour 2 minutes, राइट। टाइम स्पेंडिंग लिसनिंग टू द पॉडकास्ट रेडियो, हम कार में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, राइट, वी हैव हैबिट टू यूज द लिसनिंग द पॉडकास्ट रेडियो चैनल्स, राइट। FM हो गया, AM हो गया। यू आर ऑल्सो यूजिंग द म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज, राइट। इट्स नॉट ईच एंड एवरी टाइम पॉसिबल कि हम सारे सॉन्ग्स जो हैं we are just storing on local media, so we used to get the services of online streaming, right? So बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, right? So if you can just club all together, devices हो गया, media हो गया, internet हो गया, right? So सारी चीज़ें मिला के बहुत huge number of target audience है, तो where you can think for the online marketing कि जहाँ पे आप अपने users सारी चीज़ें देख ली, नाउ यू कैन थिंक फॉर एफिलिएटेड मार्केटिंग, ये सारे आपके मीडियम हो गए, राइट, जहाँ से आप उन लोगों तक पहुँच सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग हो गई, राइट, जहाँ पे आप ब्रांडिंग कर सकते हैं फेसबुक पे, या इतने सारे मीडियम्स अवेलेबल है। यू कैन डिज़ाइन गुड वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट पुश इट, और यू कैन जस्ट ब्रॉडकास्ट टू दिस मच यूजर्स, राइट। आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं ट्विटर थ्रू, राइट, वेबसाइट बना के। ईमेल मार्केटिंग, एडसेंस हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, मोबाइल एडवर्टाइजिंग हो गया, आपने फ़ोन पे कर दिया, SMS कर दिए, राइट। सो देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी। नाउ यू हैव टू थिंक फॉर, अगेन यू हैव टू गिव सम लिटिल हेडेक टू योर ब्रेन्स, यू हैव टू लिटिल पुश टू अ टीम, राइट, कि जहाँ पे क्या हम अडॉप्ट करें। अगेन द सेम क्वेश्चन, सेम थिंग, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, राइट। सो इट्स नॉट ऑलवेज वी कैन जस्ट go for directly online or offline. So you have to think for, you have to do some exercises. Just one more example, offline marketing में let's say if you have research all in that. The less number of rupees or less number of costing that you are reaching to the maximum number of targeted audience. So of course it is a win-win situation for your team as well as for the company, right? So ये brainstorming आपको बैठ के करना पड़ेगा कि which direction, which line you want to go for, mix करके करना है, offline marketing, digital marketing, of course you can do that, but it all depends on a budget and
what way you want to go for, right? So ये quickly हो गया अपना। अभी तक हमने सारे देख ही लिए, टारगेटेड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्या आपके प्रॉस एंड कॉन्स है, राइट? सो दिस आर द मेजर पॉइंट। यू कैन जस्ट पॉज एंड यू कैन क्विकली जस्ट गो टू इट। ये सारी चीज़ हमने देख ही ली है, राइट? सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो आपका है नेचर, दैट इज इन द स्टैटिस्टिक बेसिकली। डिजिटल मार्केटिंग है तो वो आपका होगा डायनेमिक, राइट? बिकॉज नेचर आपका स्टैटिक ये हो गया बिकॉज यू आर रीचिंग अप टू द लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग में डायनेमिक है, ओवर द कंटिनेंट, ओवर द यूजर्स, बहुत सारी जगह पे यू कैन जस्ट रीच। एंगेजमेंट आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लो है, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिजिकल एक लिमिटेशन आ जाती है। यहाँ पे आपको कहीं दूसरे कंटिनेंट पे जाना नहीं है एंड यू आर जस्ट डूइंग द ब्रॉडकास्टिंग, यू आर यूजिंग द इंटरनेट, यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, दैट मे बी पॉसिबल, दैट मे नॉट रीच अप टू द डिजिटल मार्केटिंग ROI, राइट? मेजरमेंट भी उसमें इजीली हो जाता है, बिकॉज इमीडिएट सर्विस मिल रही है आपको और इमीडिएट आपका परचेज, सेल, सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है। सो एटलीस्ट यू कैन जस्ट मेक रिपोर्ट्स, यू कैन थिंक फॉर इट, राइट? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका रीच जो है दैट इज अप लोकल, दैट वी हैव सीन। यहाँ पे आपका रीच जो है टारगेटेड ऑर्डर्स, यू कैन जस्ट डू द ग्लोबल, राइट? रिजल्ट्स यहाँ पे है डेटा डिले। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में इंस्टेंस है, लेट्स से एक ही दिन में 1 मिलियन यूज़र के पास आपका ऐड चला गया या प्रोडक्ट की प्रमोशन चलेगी, राइट? सो यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट देखना हमें शुरू हो जाएगा, राइट? सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज लिटिल बिट स्लो, डिजिटल मार्केटिंग आपका फास्ट है, राइट? सो ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है। स्टिल यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो and check all the facts